This is the 11th and the second last problem solving session for integrated waste management for the subject of integrated waste management for smart cities. And till now, nobody has done. Yes, let's wait for 2 more minutes, then we will start. Okay, the first question is the percentage of e-waste recycled globally are in the range of. So, the question is basically asking like all over the world how much, what portion of e-waste get recycled. So, the question was all, the answer of this question was also discussed in the lecture during this lecture. The correct answer for this question is 20%. Only 15 to 20% of waste all over the world get recycled, and rest of the waste, uh, the rest of the waste goes to is transferred to developing countries for their disposal. So, and so you can see the answer for this question was given in slide 6, lecture 11. And it is given that globally only 15 to 20% of e-waste is recycled, while the rest is dumped into developing countries. Recently, some countries have taken action against these dumping into developing countries. Some countries has action taken and then they have denied taking e-waste to their countries. So, so for this question, answer is option A, 15 to 20%. Moving on to the next question. Which of the following is not a hazard associated with incineration of e-waste?
question is asking which of the following is not a hazard associated with incineration of e-waste. So if we incinerate e-waste during the process of incineration, the, there's below some options are given. Out of those, which hazard is not created during the incineration of e-waste? Take some time to go through all the options and we will discuss the solution in a few minutes. So question question is asking like we have to point out of these four options which is the hazard which is not created during the incineration of e-waste. So we have four options. So the first is polyvinyl chloride present in e-waste generate toxic flue gas. This is true. Plastic present in e-waste can cause this. Second option is create leachate problem. So definitely there won't be any leachate during the process of incineration. So this is not an hazard which will be caused during the incineration of e-waste. Then C option is brominated flame retardants produce dioxins. This option is also correct. Brominated flame retardants produce dioxins. And last option is brominated retardants produce fuels. So these both options are correct. And these both statements are correct. Brominated flame retardants produce dioxins and fuels. So only B option. It, the incineration process won't create leachate. So answer should be option B. Let's let's see the solution also. Yes. So we have been given these statements. The presence of bromine as a result of flame retardants uh, raises concern about the formation of dioxin and furans. So this statement itself, which has been taken from the presentation, satisfies the last two options. Brominated flame retardants produces dioxins and furans. Then we have PBDD formations in other thermal treatment systems has been evaluated. Example pyrolysis and PBDD formation has been reported in the treatment where air was excluded.
So out of these four options, correct answer is option B. The PBDD stands for polybrominated dibenzofuran. Dibenzodioxofurans. Let's move. So correct answer for this question is create speech at all. Next question is which of the following Indian state generates the highest per capita e-waste in India according to the WEE assessment study 2005? Question is asking as per the WEE study assessment study 2005, which Indian state generates the highest amount of highest per capita e-waste? This is very important. Highest per capita e-waste. It's not highest e-waste. It's asking highest e-waste in terms of per person. We will try to solve this problem. So, question asking the highest per capita e-waste in India according to WEE assessment study 2005. So, the correct answer for this question is
Delhi. The option A. Highest per capita e-waste generating state was Delhi, and lowest was Bihar. Apart from that, India is the fifth biggest producer of e-waste in the world, discarding 1.7 million tons of electronic and electrical equipment into uh, as by the year 2040. So the correct answer for this question is Delhi. Let's move to the next question. What are the steps followed by a company in management of e-waste recycling? What are the steps followed by a company in management of e-waste recycling? So the question is basically asking if somebody is doing e-waste recycling, so how would you approach it? In what steps? So give it a try. Whether you will collect the waste and then you will segregate, then you will transport, then you will dismantle the waste and then you recycle, or you will first collect it, transport it, then segregate it, then dismantle, then recycle, or you will collect, transport, dismantle, segregate, and then recycle. So uh, take all these permutation combinations of collecting to recycling, and there's one which is used by companies in management of e-waste recycling. So you have to find out that. So give it a try.
So the correct answer for this question is option C, which is first you collect the waste, then you transport it, then you do the segregation, then you dismantle it, and then you recycle. So you can also see additional information. The answer. Correct answer is C. So additional information is recycling efficiency is to recover up to 98% of recyclable products and dispose of the remaining hazardous waste through TSDF, which is treatment storage disposal facility. So the correct answer for this question is C. Collect, transport, segregate, dismantle, and recycle. Moving on to next question, which of the following Indian state is the largest generator of e-waste in India? So the previously we had question which asks which state is the largest generator in terms of per capita generation. Here it is asking overall, not per capita. So try to solve this issue. Okay. The correct answer for this question is the largest generator of e-waste in India is state of Maharashtra. And the second number comes to Delhi. We can also see it's also mentioned in slide 15 of lecture 11. So here the table is given where the top e-waste generating states and how much waste they are generating is mentioned. So Maharashtra generated around 20,270 tons of e-waste. And then Tamil Nadu 13,400. Sorry, the second is highest generated is Tamil Nadu. Delhi is the highest per capita generator. Yeah. Then we have Andhra Pradesh, the third place with around 12,780. Then we have Uttar Pradesh, then we have West Bengal, then we have Delhi, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab, and then other states combined produce 36,610. So these are basically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. The top 10 states, if we just add
the numbers for these two states, it will be around 33.5, 33.7 around. And and the the top two states itself generate the amount of waste which uh, like the last 18 states. So yeah, so largest waste generating state in the country is Maharashtra. Yes. So moving on to the next question. Uh, Heyman, hello, hello. You're able to hear? Am I audible, Heyman? Hello, Heyman. Am I audible to you? You can respond in chat also. Hello, okay. If you're listening to this, you can answer the questions in the chat box. So the next question is which of the next question is which of the following materials has the highest contribution in e-waste for Indian scenario? So if we break down the composition of e-waste, like what contributions of different components. So we have ferrous, non-ferrous, plastic, glass. So out of these four, which has the highest contribution in the e-waste in Indian scenario? So you can answer, even if you are able to listen, you can answer for the question in the chat box also. Ferrous metal is correct. Ferrous metal is the correct answer. Option one, option A. Let's see some information on. So this is basically the table from the class lectures, uh, from lecture 11. So here we can see that in the divisions like large household appliances, small household appliances, ICT, consumer electronics, lamps. We can, for all these categories we can see that uh, the percentage of ferrous metal, non-ferrous metal, plastic, glass, and other components. So
uh, consistently we can see the percentage of ferrous metals is higher. But there is one more graph which was given in the lecture where an average value was provided, a pie chart was provided. There are also more than around 36, more than 30% uh, was given as the percentage of ferrous metal. So ferrous metal uh, has the highest contribution in EVs for its scenario. So moving on to next question. So the correct answer for this is A, ferrous metal. The next question is which of the following is an electrical and electronic waste? So this is basically talking about the uh, different different classifications of which for electrical and electronic waste. So this we have this sir has discussed in during the class, and it is given in PPT also. It's fairly easy question. Just give it a try. And so in options we have IT and telecommunication equipment, lighting equipment, medical devices. So all of the three uh, options are correct. There are some other categories also we can see we can see below here. Like we we have large household appliances there. We have appliances like refrigerator, freezer, washing machine, and other appliances which comes under large household appliances. And then in small household appliances we have equipments like vacuum cleaner, watches, grinders. Then we have IT and telecommunication equipment, which was given in this option, which include PC, printers, telephones, and we have few more, which is consumer consumer equipment, which includes TV, radio, camera, amplifiers. Then we have lighting equipment, which is here given in the options, which CFL high intensity sodium lamps. Then we have medical devices, which is given in the option. So uh, all the three options are included in electrical and electronic equipment. Apart from medical, there are automatic dispensers. So the correct answer for this question will be all of the above. Moving on to next question. Which of the following disease is caused by exposure to silver metal present in e-waste? Hello? The neurotoxicity. Yeah, neurotoxicity. Neurotoxicity is not correct. You asked is lighting equipment electrical waste? Lighting equipment comes in under electrical waste. Uh, like Okay, light. okay, sir. Uh, Thank you, sir. like here we discuss like high intensity sodium lamps and CFL. These the this glass portion is way higher in this. So if we go to this table, the lamps portion here the glass percentage will be very high. So composition will be comparatively different for the. So so there is a
Himan, have you attended the classes which sir took? Yes, sir. So, so in class, in I think in lecture 11 presentation, there was a big table, 4 or 5 slides. So there, this information is given. Like various metals are given and where they will be found in which, like in either in bulb or cathode ray tube, or which equipment they will be found and what health impacts they are. Do you remember that table in lecture 11? Like in the last of lecture 11, I think, Not fully, sir. week 11. So this silver, it will be, I think, cardiac abnormalities. We can also see solutions like silver. Uh, Basically, it will be found in capacitors, switches, batteries, resistors, and normally it will be causing cardiac abnormalities, permanent brain and nervous system damage. Next question we have: which of the following disease is caused by exposure to lead? This is fairly easy. Sir, brain cancer. Uh, brain cancer. Brain cancer. Brain cancer affects kidney. It affects kidney. Brain cancer, it affects kidney. And in Bihar, some studies were done before where like lead batteries are recycled and in between residential areas and there uh, because it is in residential area, the lead was present in soil and there was a school around. So the lead blood, uh, the lead was present in blood to the student more than the which was permissible. So in for student like at that age, it may also cause reduction in IQ. So, so let's see what are the inputs. So lead mainly is present in lead rechargeable batteries, and most of the problems are from there only because uh, informal sector recycling will be done, which is good evening, sir. Good evening, sir. So it will be lead will basically cause it can cause neurotoxin. It is basically a neurotoxin affects kidney and reproductive system, and high quantities can be fatal. It affects mental development in children. So this was I was talking about this problem where it affects the mental development of the children. It can affect the um, IQ. जी सर. हाँ. ये सर वो लेड के बारे में था मतलब बिहार में काफी
इसके ऊपर कुछ स्टडीज हुई थी, इसमें लैड जो कि जो इनफॉर्मल रिसाइकलिंग है बैटरीज की, वो अगर रेजिडेंशियल एरिया में, तो उसकी वजह से वो सॉइल में प्रेजेंट होने लग गया सॉइल में, तो उसकी वजह से बच्चे, पास में स्कूल भी था, तो उनके ब्लड लेवल में जो एक जो लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा लेड नहीं होना चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गया। इसके उस एज पे इसके इम्पैक्ट यही है कि मतलब ये आईक्यू डेवलपमेंट को रिड्यूस कर देता है 2 से 3 वैल्यू small age में। That so next question is pyrometallurgical process technique is used for process of test waste. So the pyrometallurgical process is basically an extraction process. Yeah, correct answer. जी, correct answer for this is e-waste only. So basically, three processes were pointed out by Sir during the lecture, which was pyrometallurgical, hydrometallurgical, and biometallurgical. So pyrometallurgical is basically a process, for example, smelting, which is used for the extraction of valuables. Next question is that state whether the following statement is true or false. So solid waste produced during the construction, renovation, and demolition of building, roads, bridges, and other man-made structures is called hazardous waste. Whether this फॉल्स है. statement is true or false. Match the following. डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ई वेस्ट हमें दे रखी है, उनको कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निकलेगा वो मैच कर। ये this question is also answer can be we can like get the answer from the information given in the presentation. I think 11th lecture, by 11th lecture itself we have been given the different categorization of categories of e-waste, which we discussed in slide number 8, these different categories. So here itself information can be extracted. बी और डी दोनों एक ही जैसा आंसर है. जीओडी सेम है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन हटा देता हूँ। तो वही वही वाला आएगा. अ, हाँ, वही है। बी आंसर ठीक है। सो मेडिकल डिवाइसेस में के लिए अपना रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट सीधे सीधे आ जाएगा।
उसके अलावा कंज्यूमर इक्विपमेंट और लार्ज में कैमराज लार्ज हैं। हाउस होल्ड में वॉशिंग मशीन आ रहा है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं मतलब कंज्यूमर इक्विपमेंट और ये सब हम ये जो इंफॉर्मेशन हमको वहाँ असाइनमेंट 11 लेक्चर 11 में ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, यहाँ से हम डिराइव कर सकते राइट। हैं मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर इक्विपमेंट में शायद कैमरा पूछा था उन्होंने, तो कैमरा दे रखा है कंज्यूमर इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। लार्ज हाउस होल्ड इक्विपमेंट में वॉशिंग मशीन जाएगा तो चेकआउट हो जाता है। थर्ड का ये फोर्थ आईटी इक्विपमेंट पे टेलीफोन्स मोबाइल चेकआउट हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। Landfilling of e-waste in a non-engineered landfill does not pollute groundwater। ये तो सही ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, है। गलत स्टेटमेंट है। हाँ, ये सेकंड है ह्यूमन हेल्थ इज नॉट अफेक्टेड बाय ई-वेस्ट। ये भी ये गलत भी गलत। स्टेटमेंट है। Cyanide leaching is used to recover the precious metal from e-waste। Cyanide leaching अभी हमने साइनेड थोड़ी लीचिंग प्रोसेस है है। क्या ये? Cyanide leaching प्रोसेस है ये। Cyanide leaching प्रोसेस आता है अभी अभी जस्ट अभी हमने देखा था। हाइड्रो लीचिंग में आता है, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। ये ट्रू होना चाहिए फिर। हाँ, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में आता है। तो सही है, सी क्योंकि ऑप्शन तो करेक्ट। 50 सी ऑप्शन तो हाँ करेक्ट है। 50% ई वेस्ट भी रिसाइकल नहीं होता है। ये 50% की बजाय कितना होता है? ये इसका अपने यहाँ पे तो कुछ इसका डेटा वो है नहीं, क्योंकि जो नॉन रिसाइकल जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो लेके जाता है, लेकिन वो उसमें से हार्डली रिसाइकलिंग 10-20% रिसाइकल करता है, बाकी तो फेंक देता है, तो उसको भी पूरा रिसाइकल नहीं बोल सकते। काउंट, मतलब इसमें इंडिया का अगर वैसे ही अंदाजा भी लगना है तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी 15 to 20% रिसाइकल होता है। इंडिया का भी लगभग हाँ, उतना ही है, उससे कम होगा तो हाँ, उससे कम परसेंट। ही होगा हाँ। एक्चुअली रिसाइकल आ रहा है। और जो हो रहा है वो दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है, तो उसका कोई वो रिसाइकलर का मतलब नहीं है, वो हार्डली कुछ परसेंटेज उसमें से निकालता है, बाकी तो छोड़ देता है। वो वैसे भी ई वेस्ट जो अपने रूल्स है 2011 उसके हिसाब से कई चीजें गलत भी हैं उसमें, डिस्पोजल कंटेमिनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वुड प्रेजेंट इन द सीएनडी वेस्ट कैन either be used as a fuel and can be discarded and one useful solid waste। ये true or false statement।
Correct answer for this option is true. So wood present in C&D waste can be used as a fuel or discarded in municipal solid waste land. Next question is, which of the following statements are true regarding e-waste? So there are regulations for e-waste management in India. E-waste can be both hazardous and non-hazardous. Fabric of e-waste in an unlined landfill pollutes groundwater. All are true. So which of the statements are true? We have to take some time to solve the problem. So which of the following statements are true regarding e-waste? First is there are regulations for e-waste. Yeah, we have regulation for e-waste management in India. E-waste can be both hazardous, which is true. Then C is dumping of e-waste in unlined landfill pollutes groundwater, which also true. We have unlined landfill, then the leachate which is formed in the landfill which will penetrate through ground and move to groundwater and which will pollute groundwater. So this is also true. So all the options are true. Let's see some additional information in the problem. So if we are going for like we have various disposal methods and what are the type of hazards they pose. Like if you're going for incineration as a method, then uh, what are type of hazards they can pose is uh, brominated flame retardants at high temperature of 600 to 800 degrees Celsius generate extremely toxic polybrominated dioxides and polybrominated fluorines, which is called as PBDD and P and F. And PVC generate toxic flue gas. So this basically gives us information if we do incineration of PVs, what are the compounds which can generate. Dioxins and furans will generate and toxic flue gas PVC due to PVC burning. Then we have if we go for landfilling hazardous metals like lead, chromium, mercury, cadmium, they can leach inside the landfill because they will get acidic environment. PCB, PBDE and leach into soil and groundwater. So, and third is recycling. It often causes hazardous emissions due to recycling of plastics, halogenated substances, and heavy metals like lead, cadmium. Shredding without proper disassembling causes hazardous substances dispersed into the environment. So these are the possible risks of each
type of disposal method. This information is also taken from the presentations. Uh, Presentation lecture 11 and lecture 12. Next question is, which of the following is an objective of e-waste management handling rules under the Environment Protection Act 2015? So basically, if you know the objectives of e-waste management handling rules, then we can easily answer the question. So the options for this question is to minimize illegal recycling and to promote safe recovery operations by channelizing e-waste. Yes, which of the following is an objective of e-waste management and handling rules under Environment Protection Act? ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मिनिमाइज द इलीगल रिसाइकलिंग, ये ठीक है. टू रेगुलेट द जनरेशन कलेक्शन, ये भी ठीक है. और टू रिड्यूस द हजार्डियस वेस्ट, हजार्डियस सब्सटेंसेस इन द, ये भी ठीक है. ऑल ऑफ द अबव है डी. ऑल ऑफ द सही है. और एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. इसमें ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं इसके. 4 ऑब्जेक्टिव हैं. तो मिनिमाइज इलीगल रिसाइकलिंग जो कि इधर ऊपर है. फिर अपने एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस and manage a system of e-waste collection, take back and channelizing to a registered dismantler and recycling. ये डिसमेंटलिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग, क्योंकि ये अगर ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता है तो अपने रिसाइकलिंग में भी आपका हजार्डस वेस्ट जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि अपने यहाँ पे थी. टू रेगुलेट जनरेशन, ये बाकी अपन ने इंक्लूड कर ही लिए हैं. इसके लिए करेक्ट आंसर डी है. फोन बटन ऊपर है, नीचे जो लात मारने वाला है ना वो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. एक और मैच द फॉलोइंग है जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मेटल को मैच करने हैं. तो पहला कैथोड रे ट्यूब ग्लास है. इसमें काफी सारे मेटल्स आपको मिलते हैं. तो इनमें से कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है वो आपको देखना है. इनमें से फ्लोरेसेंट लाइट, बैटरीज एंड थर्मोस्टेट. एक मिनट, क्या चीज है? मैच द फॉलोइंग है कंपोनेंट जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं. कैथोड रे ट्यूब है तो इसमें इसमें काफी सारे मेटल्स हैं. जैसे लेड भी होता है इसमें काफी. तो अभी इसमें ऑप्शन में तो लेड नहीं है. इसके अलावा कौन सा मतलब अवेलेबल है? थर्मोस्टेट में मरकुरी, थर्मोस्टेट में मरकुरी होता है ना? थर्मोस्टेट में मर्क्यूरी नहीं होगा. तो इसमें कोई मटेरियल होगा जो मतलब हीट सिंक अच्छा हो. तो मतलब बेरिलियम होना चाहिए इसका. बेरिलियम. कैथोड रेज में, कैथोड रेज, कैथोड रेज में कैडमियम ही होगा क्योंकि ये तो है, इसका तो कभी नाम नहीं सुना मैंने कि बनी. वन कैडमियम बैटरीज. कैडमियम बैटरीज में, हाँ, कैडमियम बैटरी में है. कैथोड रे ट्यूब में आएगा आपका एंटीमनी. ए डी एंटीमनी, तो डी ए वाला आंसर आएगा. हाँ, ए वाला आंसर आएगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. अपनी स्लाइड में इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सर ने दी है. जैसे बेरिलियम है अपना सीपीयू मदरबोर्ड और हीट सिंक में, तो ये थर्मोस्टेट में चला जाएगा. फिर अपने पास मरकरी है, वो लाइट स्विच रिलेज. एंटीमनी अपना सीआरटी में, कैथोड रे ट्यूब ग्लास में. कैडमियम रेटेड कॉन्टैक्ट स्विचेस, प्लास्टिक एंड बैटरीज.
तो यहाँ से इस वाली स्लाइड से अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व है। लेक्चर 12 में है स्लाइड 34 एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है pollutants that are generated due to informal recycling of e-waste are। जो इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर है वो रिसाइकलिंग तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस प्रॉपर नहीं है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हेवी क्या क्या मेटल, हैवी मेटल। ये बी वाला होना चाहिए, हेवी डी मेटल एंड प्लास्टिक। सारे होंगे हैवी मेटल्स एंड नहीं तो प्लास्टिक। ये क्या चीज है? persistent organic pollutant है, ऑर्गेनिक वाला पीयू नहीं समझ, ये सुना नहीं परसिस्टेंट है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी जनरेट होंगे। परसिस्टेंट का मतलब ये है कि ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते, पीओपीज ये जल अच्छा, जल हाँ, जल्दी डिग्रेड नहीं होते और एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक रहते हैं। तो इसके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे अपना एक वो भी है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है। पेरिस कन्वेंशन है शायद, मैं भूल रहा हूँ, जो पीओपी के ऊपर किया गया था 1918। तो ये पीओपी मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम है, जो कि काफी सारे कंपाउंड्स है जो ये आराम से डिग्रेड नहीं होते और एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक रहते हैं। फिर वो बायो एक्यूमुलेशन और एसिमिलेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि स्पीशीज में मतलब इकट्ठा हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। ये पीओपी वाला स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो 2001 में हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 2001 में। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर ही हुआ। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द। फिर अगला अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स कॉज्ड बाय ई वेस्ट। अब इसमें ये जिसमें प्रेजेंटेशन जो लेक्चर 11 है उसमें एक टेबल दे रखा है बड़ा सा 4-5 स्लाइड का, जिसमें डिफरेंट अपने मेटल और उसके किस चीज में वो यूज हुआ है और उसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, वो पूरा सब कुछ दे रखा है। इसमें सीधे बता ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें आप देख के देख सकते हैं। ये रूमेटिज्म नहीं है इसमें, डी है बस, होती है इनकी। कैंसर और चेंज इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रूमेटिज्म बेसिकली जॉइंट्स में प्रॉब्लम और वो सब होता है, गठिया टाइप। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, बस कैंसर और चेंज इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन इंक्लूड है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसर्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011। is not included in procedure of waste management and liability of collection agency, procedure for registration of recycler, procedure for authorization of producer, treatment of leachate from waste। ये ट्रीटमेंट ऑफ लीचेट का नहीं है। यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ लीचेड 2011 में इंक्लूडेड नहीं है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर।
E-waste management does not apply to which manufacturing unit or laptop manufacturing unit or battery. Batteries का नहीं होगा, बैटरीज का नहीं है, recycling is one of them. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ बैटरीज। अगला है which of the following methods adopted by an electric company corresponds to EPR, extended producer responsibility. So the following methods adopted by electronic company corresponds to extended producer responsibility. Which of the following method adopted by electronic company corresponds to APR? Creating buyback centers for mobile, collecting e-waste from the at the end of the life in the unit, improper dumping of e-waste manufacturing. EPR मतलब creating buyback centers for buyback center. अच्छा ए और बी दोनों आएगा, बायबैक A और सेंटर B, भी है और कलेक्टिंग हाँ, वेस्ट एट द एंड ऑफ द लाइफ। A और B दोनों। Which of the following is not the responsibility of SPCB and PCC? Monitoring compliance Monitoring of of compliance, registration, ensuring collection center centers to to store store e-waste for more than 6 months, preparation of inventories of e-waste. collection center to store. मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस आएगा, मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस तो है, ये तो ये मेन फंक्शन है अपना। हमको तो सेकंड भी लग रहा है, सेकंड थर्ड भी लग लग रहा है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट है, उसमें थोड़ा सा मतलब वो है चेंज। ये जो मोर देन है, ये मोर देन की जगह लेस देन आएगा, लेस देन 180 डेज इस तरीके से फ्रेम करा हुआ है। इसमें इन्होंने इस ऑप्शन में बोल दिया कि 6 महीने से ज्यादा रखें। हाँ तो ये नहीं आएगा फिर। और प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ ई-वेस्ट, ये भी इनका कम नहीं होता इन्वेंटरी बनाना। हाँ, फर्स्ट ही ठीक रहेगा। बी करेक्ट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ और देख लेते हैं बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये जो लास्ट पॉइंट है, ensuring that collection centers should not store e-waste for period exceeding 180 days। तो ये मतलब ये इस वाले स्टेटमेंट का उल्टा है, बिल्कुल एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो उसमें उल्टा है। इसके अलावा बाकी अपने प्रिपरेशन, ग्रांटिंग ऑथराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन भी एक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉनिटरिंग कंप्लाइंस ऊपर इंक्लूड हो गया, फिर मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन इम्पोज्ड फॉर ऑथराइजेशन and taking action against violation and standards and guidelines। तो ये कुछ ऑप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एसपीसीबी पीसीसी। ये भी अपने स्लाइड्स में, लेक्चर 12 की स्लाइड्स में ये गिवन है। अगला अपना क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। सपोज इन द ईयर 2013 or year of 2013 the total sales of mobile is 3,25,000. Assume lifespan of new mobile to be 3 years. Among the total obsolete mobile, 50% are further stored, 20% are landfilled, and remaining 30% are further recycled. So lifespan of recycling and stored items is 3 years. Based on the above data, the total quantity of mobiles in numbers to be landfilled in the year of 2021 would be. So 2000 इसमें we have given information about 20%। जो 20% दिया है लैंडफिल वाला वही आएगा ना? ये सर मतलब अबाउट डेटा द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोबाइल वो एक
अच्छा 2021 में कितना है वो हाँ दिखा रहा है। हाँ जी। ईयर ऑफ टोटल सेल ऑफ मोबाइल 13 में इतना है। 13 15 15 16 16 में तो सबका लाइफ खत्म हो जाएगा। और लाइफ रिसाइकल्ड का लाइफ 30 ईयर्स है, मतलब 30% इसका जो आएगा वो उस 13 14 15 16 17 18 19 तब भी 19 तक ही पहुंचेगा, 20 तक तो पहुंचेगा नहीं। मतलब सबका लाइफ स्पेन तो 19 में ही खत्म हो जाएगा, तो फिर 21 तक क्यों वेट करेंगे उसको। Of the total obsolete mobiles, 50% are further stored, 20% are landfill, 20% तो 2003-15 में लैंडफिल में चले गए. Remaining 30% of further recycle. Lifespan of recycled and stored items is 3 years. Based on the data, total quantity of mobiles in number to be landfill in the year 2021 would be. या हो सकता है साइक्लिंग प्रोसेस की टर्म्स में इसने पूछा हो. एक मिनट कैलकुलेट करते हैं. जैसे 3,25,000 तो 2000 0.2 25 65 सीधे इसमें जो, क्योंकि अपन को आगे की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है, तो जो 20% वाला जो डेटा दे रखा है हमें 20% लैंडफिल हो जाएगा, वही सीधे यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसने 3 साल बाद की ये लाइसेंस रिसाइकल और स्टोर्ड वाले की लाइफ स्पेन दी है, लेकिन उसके बाद कितना लैंडफिल में जाएगा वो नहीं पता है. करंट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अपन सीधा 20% जो लैंडफिल है वही वाला नंबर लेके कितना आ सीधा रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे मेरे हिसाब से. कितना आ रहा है। ये 65,000 आ रहा है. 65,000 आ रहा है. 65,000। और अगर हम लोग कंटिन्यूएशन में भी लें, जैसे 20% को फिक्स रख लें हर बार के लिए, ये अज्यूम कर लें अगर, मतलब ये लाइफ स्पेन और रिसाइकल और स्टोर आइटम्स की भी 3 साल है, उसके बाद नहीं भी 20. कंटिन्यू एज्यूम एज्यूम नहीं कर सकते ना, आपको नहीं नहीं सेल्स कर का नहीं डेटा भी तो नहीं दिया ना। हाँ नहीं कर सकते. वैसे तो जो सवाल है उसके हिसाब क्योंकि से, इन्होंने खाली 2013 का ही सेल्स का डेटा दिया है। हाँ 2013 की सेल्स का डेटा दिया है, और मतलब लैंडफिल का डेटा भी इन्होंने यही दिया है. अगर बाकी सेल का डेटा नहीं भी देते और लैंडफिल में 3 साल बाद और रिसाइकल जो कंपोनेंट है वो कितना जा रहा है, तो और हम और प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकते थे. पर फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से 65,000 ही है. 65,000. अगला सवाल है compilation and evaluation of the inputs, outputs and operational environmental impact of a product system throughout its life cycle is called. ये हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में काफी मतलब ब्रीफली देखा था. ये एनवायरमेंटल बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट अपने एमिट पॉइंट इंडिकेटर्स एंड पॉइंट इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि कितना एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये वाला पोटेंशियल, यही ना। एसिडिफिकेशन. हाँ लाइफ साइकिल. इसका सर अलग से भी एक ये कोर्स चलाते हैं क्या, लाइफ कोर्स असेसमेंट। चलाते, हाँ लाइफ साइकिल असेसमेंट का सर का कोर्स है ऑलरेडी एनपीटीएल पे. वो यू इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या ये वाले से, कि वो मतलब लाइफ कंटेंट का है पूरा। साइकिल लाइफ साइकिल असेसमेंट सर ये बेसिकली जैसे आपने, हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या
कि मैंने कोई मटेरियल बनाया, जैसे मैंने एक फोन बनाया, तो फोन का मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये इसका कुछ एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसका मैं जैसे मैंने फोन लिया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, प्लास्टिक भी यूज हो रहा है, मेटल भी यूज हो रहा है। तो अलग अलग वो माइन होके आ रहे हैं अलग अलग जगह से। तो वो एनवायरमेंट माइनिंग राइट फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग से लेकर जब से वो माइन हुए हैं, उन्होंने एनवायरमेंट पे कितना इफेक्ट डाला, कितना पानी उसमें यूज हुआ, कितना CO2 एमिशंस हुए, ना कितना नाइट्रोजन फास्फोरस रिमूव एमिशन हुए, जो कि एसिडिफिकेशन पोटेंशियल यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल बता रहा है। कितना मतलब SO2 एमिशंस हुए, एसिडिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितने एमिट हुए, जो जो अपनी एसिडिफिकेशन पोटेंशियल बताएंगे एसिड रेन और उसकी वजह से। तो हम देखते हैं कि अगर मैं फोन बना रहा हूँ तो हर जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है वो कहाँ से आया है, उसको मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आया है और उसका इम्पैक्ट कितना है एनवायरनमेंट पे। टिल द टिल इट्स हम वो डिसाइड कर सकते हैं कहाँ तक हम देखना चाहते हैं, मतलब एंड ऑफ लाइफ देखना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही देखना चाहते हैं, या फिर जब जब वो खराब हो जाए और जब वो डिस्पोजल होगा तब भी वो कुछ इम्पैक्ट डालेगा। तो ये जो पूरी स्टडी होती है ना, ये पूरी इसको लाइफ साइकिल असेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें अब मन को मिड पॉइंट इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और यूट्रोफिकेशन हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं कि ये जो जैसे जो मैंने फोन बना रहा हूँ तो वो हर कैटेगरी में कितना कितना पोल्यूशन कर रहा है, या फिर कई तो बार। ये इसके लिए यूजफुल होता है क्या, जो मैन्युफैक्चरर और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए, मतलब हम लोग को, जैसे हम लोग ये वेस्ट मैनेजमेंट देख रहे हैं तो हमारे लिए तो ज्यादा यूज उतना वो इनको। नहीं नहीं, हमारे लिए भी जैसे डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि कौन सा मटेरियल है उसका, मुझे कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट उसका मैंने रिसाइकिल करना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट लैंडफिल में चले जाना चाहिए, तो उस जैसे प्रोसेस जैसे। मान लो मेरे पास में वेस्ट आया, हम्म, उसका मान लो वेट वेस्ट का जो भी बायो मिथेनेशन या कंपोस्ट कर दिया, और जो ड्राई वेस्ट जो बच गया, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और सब लगाते हैं, ऑटोमेशन और ये सब, और कोशिश करते हैं कि वो रिसाइक्लेबल अलग अलग टाइप के प्लास्टिक को अलग करें, हाँ, और उसको, जैसे मान लो एच टी, आपका एच जो मतलब अच्छा क्वालिटी का जो प्लास्टिक है, उसकी जगह पे अगर मैं ये देखूं कि सपोज मेरा ड्राई वेस्ट निकला 40%, पूरा 40% ऐसा कैसे उठा के भेज दिया मैंने सीमेंट में, वो किलन में बर्न करने के लिए, हाँ, तो वो बेटर ऑप्शन है कि मैं उसमें से कुछ वेस्ट हाँ, इन्वेस्टमेंट करूं, बस एमआरएफ मटेरियल यही रिकवरी फैसिलिटी लगाऊं, यही और यही उसको निकालूं, फिर मार्केट में जाए, फिर घूम के वापस वेस्ट होके आए। यही जो ये जो प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं सर, यही इसी को। अब जैसे ये दो चीजें हैं, अब इसमें कौन सी चीज अच्छी है ये हमें पता नहीं है। तो यही पता लगाने के लिए अब दो तरीके हैं। एक तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कि भाई पैसे की बात करें तो पैसा किसमें कम लग रहा है। एक तो तरीका वो हो गया, जिसको अपन टेक्नो इकोनॉमिक बेसिकली असेसमेंट बोल देते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट कम होना चाहिए, तो वो वाली चीज लाइफ साइकिल में आ जाती है। तो ये दोनों एनालिसिस करके, जो आप डाउट पूछ रहे हैं ना कि दो तरीके हैं या तीन तरीके, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो सेलेक्ट करने का तरीका है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट के टर्म्स में देखें कि एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट सबसे कम किस तरीके में होगा, तो वो लाइफ साइकिल असेसमेंट से पता चल जाएगा। ओके। और अगर जैसे हमें एक और एग्जांपल माइंड में आता है। जी मान लो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, उसकी जी जगह पे ग्लास बोतल यूज करो, स्टील का बोतल यूज करो, जी जी लेकिन जो प्लास्टिक को को बनने में, उसका यूज होने में क्या कॉस्ट आता है, एक वो ग्लास का भी तो बोतल कहीं से बन के आता है, उसका भी तो माइनिंग होता है, तो जी वो सब के अंदर भी कितना कॉस्ट आता है, वो भी जी मतलब वो भी एनालिसिस में हो वो सकता है। सब अपन एनालाइज कर सकते हैं इसमें कि प्लास्टिक बॉटल बना रहे हो आप और ग्लास की बॉटल बना रहे हो। तो दोनों का जो पूरा प्रोसेस है, बिल्कुल रॉ मटेरियल के निकालने से लेके पूरा उसकी एंड ऑफ लाइफ तक कितना वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा पूरा पता चल जाएगा। और वैसे ही उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा वो भी पता चल जाएगा, दोनों के लिए पता लग, फिर आप उसको कंपेयर कर, हाँ हाँ। क्योंकि ग्लास बॉटल आपने बनाई है उसको बार बार रिसाइकिल करके अपन मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक को भी अपन एक
एन नंबर ऑफ टाइम ही रिसाइकिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट टाइम हम रिसाइकिल करते हैं। ग्लास के साथ भी होता है, इम्प्योरिटीज उसमें आती जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर एनालिसिस करें तो उस तरीके से। ठीक ठीक। State which of the following to e-waste management handling group T11 applied to micro small industries. फॉल्स है, ऐसा तो कुछ डिफाइन नहीं है। हाँ। हाँ, और कोई मीटिंग में है नहीं ना। ठीक। क्या मैं हिंदी में बोलने लग जाता हूँ बीच बीच में, तो कुछ बच्चे मतलब जैसे अगर साउथ से हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा हिंदी में अच्छा, बोलने, हाँ, तो मैं राइट वही राइट। देख रहा था कि और बच्चे तो नहीं है कोई। हम दो ही दिख रहे लगता है। हाँ, नहीं, एक ये गेस्ट गेस्ट है, ये मैं हूँ कि कोई और है? आप ही हैं सर, मनोज के सर। ठीक है, ज्यादा बच्चे भी नहीं है, सवाल दो चार ही। एक्सपेंडेड ईपी, ये तो फुल फॉर्म बतानी है ईपीआर की, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आप आपके अंडर मतलब कुछ आप डील करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर किसी नहीं सेंस रहे हैं, में? लेकिन हम अभी अभी हम कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम तीन तीन साल से हमने एक ई वेस्ट का कलेक्शन सेंटर हमने बनाया हुआ है। तो इसमें हम लोग टाउनशिप से भी इकट्ठा करते हैं, और हम आसपास का सारा इंडस्ट्री से भी हम लोग अभी लेके, और हमने एक पीआरओ है कलकत्ता में, उसके साथ टाइप करके रखा है। तो वो सेंटर चला रहा है, वही फिर बाद में लेके जाता है। तो सर्टिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अभी हमारे पास 3 साल का हो गया, जो हम टाटा ग्रुप का दूसरा कंपनी से हम ले रहे हैं। तो हाँ। हम कोशिश कर रहे हैं अभी नेक्स्ट ईयर में भी ये मतलब अगले कुछ टाइम में इसको ये अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी हमको जो नया पता चल रहा है कि अब तो हम ये जो इकट्ठा करके अभी ई वेस्ट जैसे इसको पीआरओ को दे रहे हैं। अभी ये है कि वो पीआरओ को नहीं देना है, आपको देना है जो रिसाइकलर है ऑथराइज्ड, उसी को देना है। तो वो भी एक अच्छा। थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं कि हाँ। हमको इसमें लेना है या फिर डायरेक्ट रिसाइकलर के साथ ही टाइप कर लें। रिसाइकलिंग के टाइप क्योंकि करना पीआर ज्यादा सही। हाँ, रिसाइकलर के साथ टाइप करना ऑथराइज्ड के साथ इसलिए जरूर अच्छा है, क्योंकि वो जितना मैक्सिमम हो सकता है सारी चीजों को रिसाइकल करके, और फिर बचा हुआ को वो वो भी प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करेगा, जो पोल्यूशन कंट्रोल में रिकॉर्डेड रहेगा। रिकॉर्ड। अभी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर मतलब ये जो पीआरओ वगैरह है, इन लोगों का फिर पता नहीं, हमसे लेके जाएगा, हमारे ले जाने के बाद और उसको किसको देगा, क्या चीज निकालेगा, कितना हाँ। छोड़ेगा, उसका क्लैरिटी नहीं आ रहा है उसके अंदर। हम्म, ठीक है। अगला है अपना the following statement is true or false. Device devices with larger matter steel. Tended to fail the TCPL less often. हाँ, ठीक है, बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, क्योंकि इसको सही स्टील में कुछ ऐसा लीचेट तो वो निकलता नहीं है। ट्रू हो जाएगा। अगला है अपना what are the different recycling methods for the discarded e-waste? रीसेल भी है, डिस्कार्ड इन द लैंडफिल, डिस्कार्ड इन द लैंडफिल तो डिसमेंटल एंड सेल द पार्ट है। इंसलरेट, इंसलरेट नहीं, डी डी तो नहीं है। डिस्कार्ड इन द लैंडफिल भी आई थिंक रीसेल और डिसमेंटल एंड सेल द पार्ट्स, ए और सी। हाँ, ए और सी सही है। डिस्कार्डिंग लैंडफिल तो रिसाइकलिंग का तरीका नहीं हुआ, क्योंकि तो हाँ, लैंडफिल डिस्पोजल हो गया सीधे। और दो और है इसमें रिसाइकलिंग में, वही मतलब रीसेल हो गया, रिफर्बिश, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके फिर से रीसेल, जैसे अपने फोन्स फोन्स होते हैं रिफर्बिश,
मतलब काफी सारे। हाँ फोन्स का आता है, हाँ अमेजोन पे मैं देखा है। हाँ, और काफी रिफर्बिश वाला आता है। कैशिफाई और ऐसी साइट्स हैं जो प्योरली रिफर्बिश फोन बेचती हैं। फिर डिसअसेंबल एंड सेल पार्ट्स, ये भी है। बेसिकली ये वाली चीज तो नॉर्मली अपने मैकेनिक जो भी मैकेनिक्स हैं वो सब हैं, ये ऑलरेडी करते ही हैं अगर उनको ओल्ड और वो हाँ मिलता है तो। कूलर कूलर और पंखा फेल हाँ होता है तो उसका मोटर वोटर निकाल के पहले बेच देते हैं, उसके बाद बाकी का फिर देखते रहते हाँ, मोड सही। फिर हमने रिकवरी स्क्रैप वैल्यू ऑफ पार्ट, तो ये तो एट द एंड सारा सब कुछ करने के बाद यही बचता है। हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्रेशियस मेटल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ई वेस्ट। तो ये रिफर्बिश और रीसेल ही लग रहा है, स्मेल्टिंग और ये तो आपका उसमें चला जाएगा। ये सर एक्सट्रैक्शन के लिए बायो है। ये अपने रिफर्बिश रीसेल हो जाएगा रिसाइकलिंग के लिए। तो तो अगर जब बायोलिचिंग भी नहीं होगा ना? बायोलिचिंग होगा, बायोलिचिंग अपना प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन में तीन प्रोसेस हैं अपने। एक तो पायरो है, और एक हाइड्रो है, और एक बायोलीचिंग। तीन प्रोसेस हैं, ये है तीन। एक तो पायरो मेटलर्जिकल, हाइड्रो मेटलर्जिकल और बायोमेटलर्जिकल। बायोमेटलर्जिकल में अपना बायोलीचिंग आता तो है। ये होगा, ये तीन है अपने। तो उसमें पायरोमेटलर्जिकल में स्मेल्टिंग आ जाता है, तो स्मेल्टिंग होगा, और बायोलीचिंग। ठीक है सर, और ये इतने ही क्वेश्चन है आज। 21 कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल नहीं थे ना आज? मैं सोचा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल एक ही था वो, उसमें इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं। इनिशियल वाले अपन देख सकते हैं एक बार। स्टार्टिंग के जो आपने 10 क्वेश्चन मिस हुए हैं जो। एक फर्स्ट था परसेंटेज ऑफ ईवीएस, ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, 15 से 20। फिर दूसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैजार्ड एसोसिएटेड विद इंसिनरेशन ऑफ ई वेस्ट। तो इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रेजेंट इन ई वेस्ट जनरेट टॉक्सिक फ्लू गैस, ये सही है। इंसिनरेशन में पीवीसी बर्न करेंगे तो टॉक्सिक फ्लू गैस जनरेट होता है। इसके अलावा ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन फ्यूरेंस, ये भी सही है। पीबीडीडी और पीबीडीएफ दोनों प्रोड्यूस होते हैं। और इंसिनरेशन में लीचेड प्रोड्यूस नहीं होता, तो बी ऑप्शन। करेक्ट। तीसरा अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट जनरेट हाईएस्ट पर कैपिटा ई वेस्ट। पर पर्सन के हिसाब से सबसे ज्यादा ई वेस्ट कौन दिल्ली में सी है। स्टेट जनरेट करती है, तो दिल्ली में है। इसका लोएस्ट बिहार है। और अगर यही हम पर कैपिटा हटा दें, पर कैपिटा की जगह एब्सोल्यूट वैल्यू हाईएस्ट कौन सा है, तो वो चेंज हो जाता है फिर। महाराष्ट्र स्टेट एब्सोल्यूट में ऊपर है सबसे। ये अपना विद ये ठीक है, मैनेजमेंट। कलेक्ट ट्रांसपोर्ट सेग्रीगेट डिसमेंटल रिसाइकल। ये वो अपना तो इन कलेक्ट जनरल जस्ट हाईएस्ट कौन सा है। जनरेटर इन इंडिया। अच्छा ये जनरेट करता है, ओके मुंबई ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हाईएस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में। और दिल्ली अगर पर कैपिटा पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाले तो दिल्ली का मैक्सिमम। फिर अपने विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ई वेस्ट फॉर इंडियन सिनेरियो। ये मतलब अपना जो डिफरेंट ई वेस्ट को सब डिवाइड करें, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, अदर्स में, तो फेरस फेरस ज्यादा रहते हैं उसके। कौन सा कंपोनेंट ज्यादा रहता है, तो वो ये टेबल अपने
नोट्स में दे रखी है। इन जनरल एक पाई चार्ट भी है स्लाइड लेक्चर 11 में, जिसमें एवरेज करके दे रखा है। तो नॉन फेरस का कंपोनेंट शायद 30 से ऊपर है, 38 या समथिंग, एज कम्पेयर टू नॉन फेरस। तो फेरस मेटल ज्यादा है इंडियन सिनेरियो में ई वेस्ट। फिर ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया था, इलेक्ट्रिकल चलिए ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट कंपोनेंट्स। सिल्वर की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो हमने इसमें कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, प्रीमेच्योर ब्रेन ब्रेन नर्वस सिस्टम। ब्रेन डैमेज एंड नर्वस सिस्टम। रेड का शायद आप आ गए थे इसके तक, यहाँ तक रेड वाले। हाँ तो ठीक है। ओके यही है सर। कल वाले में ठीक। कल अगला जो नेक्स्ट वीक का होगा उसमें पूरा सिलेबस के जितने क्वेश्चन होंगे तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ले लूंगा सारे अगली वाली क्लास में पूरे। हाँ न्यूमेरिकल को एक बार खाली गो थ्रू कर लेंगे, बाकी हाँ थ्योरी तो चलता रहेगा। हाँ, पूरे सिलेबस का मैं अगले वाले लेक्चर में पूरे सिलेबस में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब जगह से एक एक उठा के वो बता। हाँ इन्होंने कुछ उसमें 12th वाले में कुछ दिए भी है ना, 12th वाले में क्या दिए सर? उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, तो वो तो अभी डिस्कस इसमें कुछ करने दो के लिए बोला नहीं होगा इन्होंने कि? सॉल्व करने के लिए बोल के रखा था। मैं अब डिस्कस तो उसको कौन करेगा, वो तो हो गया खत्म, ठीक 12 लेक्चर 12 ठीक है, मॉड्यूल। मैं वो देख लूंगा, मैं वही वही क्वेश्चन ले उसमें लूंगा। उसमें दो दो लेक्चर थे जिसमें कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करके भी बताया था, हम्म। और उसके बाद में कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कुछ मेरे ख्याल से 7-8 प्रॉब्लम दिए हुए थे। ठीक है, वो मैं प्रॉब्लम वही सॉल्व करके और उसमें वही प्रेजेंट कर दूंगा, उसके सॉल्यूशंस देख लेंगे। और भी मेरे ठीक पास है क्वेश्चंस पड़े हैं बहुत सारे, तो उसमें से भी जो भी ओके और लगेगा तो ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक है, बस ठीक है भाई, गुड इवनिंग, बाय बाय। बाय। Unknown user, actually we have discussed the questions for today's class. Do you want me to go through all the questions? So, am I audible to you? Unknown user, we have gone through today's questions. We have around 31 questions. We have gone through all of them. Do you want me to discuss those questions again?
So we can end the meeting for today. Um, We'll meet next week. Next week, last week, we will discuss all the numericals from starting to end.